Now let's come to distance between 2 points. And slope. So you'll need to draw a figure over here. Okay. Take 2 points, one over here and one over here. Let us say we are looking for the distance between these 2 points. We join them in a line. Let's take these coordinates x2, y2, and this guy as x1, y1. Now, if you understand the basic of coordinate geometry, what is going to be this point? X. X0, x1. And what's about this point? This is x2. X2. So this is x1 and this is x2. Similarly, if I draw this, what about that point on the y-axis? Y1. And what about this point? y2. Y2. All right. Now see, what about this point? Can you name the coordinates for this point? What is the x coordinate of this point? x2, y1. And the y coordinate is y1. Now, can I get this particular distance? Here, the y coordinate is same, isn't it? Y1 over here, y1 over here. So what becomes the distance? Isn't it the distance simple x2 minus x1? The difference between these two. Correct? Yes. Similarly, what about the distance of this guy? Very similar to this. That's y2 minus y1. This is 90 degree. And this is what I was looking for. D, the distance between 2 points. That's why we did all this stuff. So can I apply Pythagoras theorem and say the distance is equals to under root of the sides squared and addition? So x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square. Am I clear from where this has originated? Yep. Dhruv? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the distance between 2 points. And guys, what is slope? Slope is something like this. If you join or extend these 2 points or extend the line, it will go ahead and intersect the x-axis. Now listen to me very carefully. The angle formed by the line with the positive x-axis, okay, this angle theta is the slope of line. So a line and the angle formed by the positive x-axis. So here we have the positive x-axis, this side, right? Not this side. This is not theta. The line and the positive side of the x-axis. This is theta. So this is called as your slope. Slope is measured in degrees. That's theta. And slope is also measured in a real number. And when it is measured on a real number, it is called as m, which is equals to tan of theta. All right. So it can be given a number, a specific number. Like I can say the slope is 2, slope is 3, slope is 5. Or I can say that slope is 50 degree, 30 degree. So if you're looking for this number, it can come very easily. Because I know that m is equals to tan theta. And guys, if this is theta, this also is going to be theta. Parallel lines, perpendicular, corresponding angles. Right? Aisha? Shishir? Manmeet? Yes, sir. Yes, sir. And what is tan theta? Right now, you might be knowing it, you might not be knowing it.
But you remember from your 10th class, tan theta used to be perpendicular upon base? Yes. Yes, sir. And Y2 perpendicular minus was? y1. Perpendicular is this, the side in front of the angle, and this is base. Don't worry if you don't know, it doesn't matter. इसके बाद आप कभी ये फिगर नहीं बनाओगे, आप बस इतना याद रखोगे कि tan theta is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए कि यार ये कहाँ से आया. ठीक है, तो slope becomes perpendicular upon base. Clear बात मनमीत, आयशा, शिशिर? Yep. Yes, sir. Now, to be honest, if you don't remember any derivation, I don't care. You should remember these two things. ठीक है? Done, sir. Done. Aisha? Done, sir. No, great. So I'm removing it, all right? Okay. So I think so. Ordered pair done. Cartesian plane done. Distance formula done. Slope of line done. Right? Just have a go with the simple question. Right? Just the basic one. I give you 2 points, 3,5, and let us say 9,14. Can you tell me what is the distance? So under root of how much? Okay. So we'll have 9 minus 3, that's 6 squared, plus 14 minus 5, that's 9 squared. Right? So this gives you 36, this gives you 81. How much? Under root 17. Under root 117. Easy, right? You can get the Yes, distance into points. What about the slope, guys? By 2. 9 by 6, you already calculated. y2 minus y1, x2 minus x1. So it's 3 by 2. Simple? Correct? Yes, sir. Okay. The questions can be other way around as well, right? The question can say to you that the slope of line is 2 and the points are 3, 1 and k, 2. What is going to be the value of k? Find k. 1 by 2. So 2 minus 1 upon k minus 3 is equals to slope of line, which is 2. So it becomes 2k minus 6 equals to 1. 2k equals to 7 and k equals to 7 by 2. मनमीत, शिशिर, ध्रुव, क्लियर है, इजी है, Yes, sir. हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है. एक चीज और है बेसिक जो आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. इंटरसेप्ट, इसका क्या मीनिंग होता है समझते हैं. देखो कोई लाइन है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, लेट्स से यहाँ जो इंटरसेक्ट करी ये पॉइंट है 0,5, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 7,0. एक बात याद रखो, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो कौन जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ऑलरेडी पता है. अगर एक पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो कौन जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट. ये ध्यान रखना, कभी कभी लोग ऐसे एक्स को वाई मान के चलते रहते हैं, कहते हैं सर इक्वेशन ही नहीं बनी. एक जीरो है ऑलरेडी, दिमाग लगाना है. तो ये जो डिस्टेंस है कितना है 5. तो अगर y एक्सिस को 5 पे काट रहे हो तो आपका y इंटरसेप्ट कितना हो गया 5. इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, कि आपको लाइन में कहाँ पे काटा. ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट. ठीक है, तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया 7. ठीक है, कि आप अपनी x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे काट रहे हो. एक बात याद रखना कि आपके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू साइन होते हैं. ठीक है, मतलब कल को अगर मैं आपका लाइन ऐसी कर दूंगा, ठीक है, डिस्टेंस मत समझना इंटरसेप्ट को. अभी मान लेते हैं 0,3 है और ये -2,0 है, तो ठीक है, इसका y इंटरसेप्ट तो 3 है, बट इसका x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा
-2 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू साइन होते हैं, दीज आर नॉट द डिस्टेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात, दे आर विद रिस्पेक्ट टू साइंस। ये लाइन 2 के हैं, ये लाइन 1 के हैं, ये लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गई। यहाँ तक बात क्लियर होती है? पार्थ, शाश्वत, कशिश। जी सर। तो जब मैं स्लोप ऑफ लाइन की, जब मैं आपके इक्वेशंस ऑफ लाइन की बात करूंगा तो मैं इन सब चीजों की बात करूंगा। ठीक है, मैं स्लोप की टर्म का भी यूज करूंगा, मैं इंटरसेप्ट का भी यूज करूंगा, तो आपको ये सब मालूम होनी चाहिए बात। वहां पे अगर आपका ये क्वेश्चन होता है कि सर ये इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, तो हम लोग अभी रेडी नहीं है फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, क्लियर बात?